Well, Australia is in rivals den, and there is no turning back this time because नागपुर में ही रेस्ट होने वाला है, and definitely इस मैच से ज्यादा यहाँ की पिच ने कंट्रोवर्सी क्रिएट करी है. And I have two gentlemen with me to talk about this, Pratyay and Kaustav. Thank you so much for joining me here. Pratyay, I'll start with you because we all know कि जब से ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक्चुअली उस पर्टिकुलर डे से कभी स्टार्ट नहीं होती जिस दिन से वो टेस्ट मैच खेला जाता है, बट उसके काफी दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है बिकॉज कंट्रोवर्सीज और जिस तरह के स्टेटमेंट्स पास होते हैं उससे पता चलता है कि पूरा माहौल बन जाता है. बट डू यू रियली अग्री विद द काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी ऑस्ट्रेलियन मीडिया हैव क्रिएटेड ओवर द पिच इन नागपुर? Not really. See, I think this is one of the biggest rivalries that you talk about. कहीं पे लिखा नहीं है. This is not a written thing or not a spoken thing, but with Steve Smith and Patty Cummins and the likes of them saying that this is perhaps going to be bigger than the Ashes. Now you can say that perhaps India-Australia rivalry is indeed the biggest one. So of course there are plenty of mind games, plenty of things that the opposition will try to do and just try to get into your skin or get into your heads. That is what India is doing as well, and that is what Australia are trying to do as well. But I don't really think it looks good when players of the caliber of Australia, and because we know that this is a very fighting side, what they have done in their cricket history is tremendous. So when these kind of players actually come up and make any hue and cry about the pitch, it does not really look good. So it was actually very satisfying to see what Pat Cummins said about the pitch at the eve of the match in the press conference, because he is not looking concerned about the pitch, and that is what the case should even be. When you're coming to India, when India travels to Australia, perhaps you know that there is going to be pace and bounce. There are going to be pacers like Johnson, Lee, Cummins, Stark, who are going to come at you strong, who are going to test you, going to test both the edges of the bat. They're going to bounce you out. When you come to India, of course, you're expecting the likes of the spinners, the Kumbles, the Harbhajans, the Ashwins to challenge you, the Jadejas to challenge you. So I think this is what the challenge of touring India is all about. And if you're complaining about about turn, and you're calling stuff like fair pitch, which actually is nowhere defined, because you really cannot say what is a fair pitch. I mean, a turning pitch is a fair pitch as much as a bouncing or a pitch that is giving you a lot of zip with the new ball is. So I think pitch should not be that much of a discussion of matter, because this is the script that is being given to both the sides. And it's not like that Australia is only going to play on that pitch, and when India comes on to bat, they are going to bat on a different pitch. So I don't think that pitch noise makes a lot of sense. But yes, a great rivalry indeed, and a very, very mouth-watering test series ahead of us, because not to forget that India's chances of qualification for the WTC final also rely upon this. So I think it's a very, very good series at the hands. Yeah, Kaustav, right now ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जिस तरह से इस पूरे इशू को क्रिएट किया है, एंड इवन नॉट जस्ट द मीडिया बट द फॉर्मर क्रिकेटर्स एज वेल, जैसे कि लिटरली ऐसे प्रत्यय ने अभी बोला कि इंडिया किसी अलग पिच पे खेलेगी और ऑस्ट्रेलिया किसी अलग पिच पे खेलेगी और दोनों को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा. एंड एज फार एज आई नो अबाउट क्रिकेट एंड वी ऑल डिस्कस अबाउट इट कि अगर आप किसी भी होम कंडीशंस को कभी भी टोर करते हो किसी और की होम कंडीशंस को, तो डेफिनेटली वो अपने हिसाब से चीजों को क्रिएट करते हैं. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. दैट इज कंप्लीटली like the part of the rule of cricket. So how do you see this, and do you really see कि इतना issue create होना चाहिए था rather than जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की rivalry in terms of test, because ये आपको mentally challenge करता है और players को भी disturb करता है. आई थिंक इसी कारण होता है कि आप मेंटली थोड़ा चैलेंज करो. ऑस्ट्रेलिया मीडिया ये बहुत करता है मेरे हिसाब से, क्योंकि लास्ट टाइम जब इंडिया टूर किया था 2020-2021 सीजन के लिए, तब ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने मिचेल क्लार्क और बहुत सारे ऐसे माइकल क्लार्क बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स ने बोल भी दिए थे कि 4-0 होगा सीरीज का स्कोर लाइन, विराट कोहली नहीं है तो इंडिया कैसे खेलेगा. तो ये ऐसे बहुत सारे माइंड गेम खेला जाता है एक बहुत बड़े सीरीज से पहले. तो पिच रिलेटेड जब भी इंडिया में मैच होता है, कोई भी बाहर का टीम आता है, इंग्लैंड आ जाए या फिर साउथ अफ्रीका आ जाए या फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाए, तो ये बात हमेशा होता है कि पिच कैसा होगा, क्योंकि उन लोगों का एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स में खेलने के लिए. तो ऑफ कोर्स ये एक है चीज जो ऑस्ट्रेलियन टीम को, ये टेस्ट क्रिकेट है, तो ऑफ कोर्स यू विल बी टेस्टेड अगेंस्ट क्वालिटी स्पिनर्स, ये एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग. तो आई डोंट थिंक सो ये होना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स जब भी इंडिया में मैच होगा, टेस्ट क्रिकेट होगा, इसके बारे में बात होगा ही होगा, क्योंकि अगेन दे आर नॉट यूज्ड टू प्ले इन दिस कंडीशंस. राइट.
और इसके पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि ये एक्चुअल जो मैच है इसकी चीज के बारे में, लेकिन कंट्रोवर्सी के बारे में बता देती हूँ। एक्चुअली नागपुर टेस्ट में कुछ दिन पहले कुछ सर्टेन पैचेस पर वाटरिंग की गई थी और उसके बाद में पिच को रोल किया गया था, जिसके चक्कर में कुछ पैचेस इनको ड्राई छोड़ दिया गया और कुछ जगहों पर पानी भरा गया। इफ आई एम रॉन्ग प्रत्यय, देन टू करेक्ट मी हियर। सो जिससे क्या हो रहा है कि कुछ सर्टेन पैचेस हैं जो कि ड्राई है, कुछ सर्टेन पैचेस हैं जो कि वाटर है, तो उसको सिलेक्टिव टर्निंग की तरह उस पिच को क्रिएट किया गया, जिसके चक्कर में ये पूरा इशू क्रिएट हो रहा है। वेल इस कंट्रोवर्सी को मैं यहाँ रोकती हूँ बिकॉज टॉस हो चुका है एंड ऑस्ट्रेलिया हैज ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट। और डेफिनेटली एक ये चीज बोली जाती थी, इवन के टाइम पर भी कहा गया था कि राइट नाउ जैसी पिच बिहेव करे या ना करे, जिसके बारे में अभी हमें मालूम नहीं है, तो उसके चलते पहले बैट करना ही करेक्ट होगा। और मेरे सामने यहाँ पिच रिपोर्ट है, मैं आपको बता देती हूँ, जो अभी फिलहाल सुबह सुबह मॉर्निंग में एक्सपर्ट्स ने अपने एंड से दिए, विच इज संजय मांजरेकर। उन्होंने कहा है, my first reaction is the soil looks pretty rough. You can see the cracks as well, but because there is grass, the crack may stay intact. But the real talking point is the rough area right here, the left-handers against the left-arm spinners. It's going to be a nightmare for them because there is tremendous potential for the left-arm spinner. So, प्रत्यय ऑस्ट्रेलिया ने अपना काम कर दिया है, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करी है। सो हाउ डू यू सी दिस, बिकॉज अगेन ये पिच ऐसी है जहां पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों खेलने वाले हैं। सो हाउ डू यू सी दिस, और क्या ये इंडिया के लिए एक सेटबैक होगा? आई थिंक टॉस मे नॉट मैटर दैट मच। अगर जो हम सुन रहे हैं पिच के बारे में कि अगर वो पहले दिन से ही थोड़ा सा टर्न करती है और लो रहती है, सो परहैप्स उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा टॉस, बिकॉज देन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट गुड बैटिंग कंडीशंस राइट ऑन डे 1 एंड डे 2, बिकॉज सब कॉन्टिनेंट में यूजुअली फर्स्ट एंड सेकंड डेज आर द ones which are considered the best for batting, and then from day 3, day 4, day 5 onwards it starts to become a little more challenging because the cracks will start to open up, the spinners will start to come into play. But at the moment, going by what Sanjay Manjrekar has said, and whatever in the build-up we have been listening about the pitch, you might as well see someone like an Akshar Patel and Ravindra Jadeja getting turned from the very start itself. And Peter Handscomb is playing, Travis Head not playing, so perhaps you can then judge that maybe Australia is indeed thinking on the lines of trying to just mitigate the left-hander bevy side that they are becoming, because there are plenty of left-handers and that is going to be a challenge for them. Not to forget, of course, R. Ashwin. I mean, he is someone who devours left-handers. His record is one of the best when it comes to bowling to left-handers. So I think Indian spinners are going to definitely challenge the Australians. But now that they have won the toss, if at all, because this is still a fresh pitch, yes, there are dry patches, there are all of those things, selective watering done, selective mowing done, all of that aside, this is still the best and the fresh pitch that you're going to bat on. And once it becomes, see, because as the match progresses, there is no chance of it becoming better. Going by what we are hearing, I don't think that it is going to be a pitch which will become better to bat on. If you're batting for 50, 60, 70, 80 overs, it will only further deteriorate. And now that they have won the toss, you are looking at perhaps at the moment, unless something very dramatic happens, that India would be batting fourth. So I think at the moment, Australia would be still slightly happy about winning the toss if they can manage to put something like a big score. And on tracks like these, you never really know. I mean, even a 300 or 350 can be very, very challenging. So I think it's still a good toss to win. And with the team selection regarding Australia, I think that they've tried to bring in a bit of right-handedness in the 11. So I think Indians will also try to just play on with their mind games, and let's see how this one pans out. राइट और इसी के साथ टॉस के साथ साथ हमें प्लेइंग 11 का भी पता चल चुका है। इंडिया के एंड से के एस भरत और सूर्य कुमार यादव को कैप दी गई है डेब्यू की, और उनकी कुछ प्लेइंग 11 इंडिया की ऐसी है कि रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल विल बी ओपनिंग, चेतेश्वर पुजारा ऑन नंबर 3, देन विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव इस पोजीशन पर खेलेंगे जो कि ऋषभ पंत की आइडली हुआ करती थी। सिंस वो इंजर्ड हैं और अवेलेबल नहीं है, इसलिए उनकी जगह सूर्य कुमार यादव है। देन श्रीकर भरत, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी एंड मोहम्मद सिराज। कौस्तव, ऋषभ पंत की कमी कितनी खलेगी, बिकॉज लास्ट टाइम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वी डू रिमेंबर जैसा उन्होंने परफॉर्म किया था, एंड डेफिनेटली इस वक्त अवेलेबल नहीं है ड्यू टू एन एक्सीडेंट। बट क्या ऋषभ पंत की कमी बहुत खलने वाली है इंडिया को, या इंडिया मैनेज कर सकती है विद सूर्य कुमार यादव इन प्लेइंग 11? देखिए, सिंस इंडिया में मैचेस होने वाले हैं तो ऑफ कोर्स हम ऋषभ पंत को मिस करेंगे, लेकिन कितना मिस करेंगे वो अभी बता नहीं सकते, क्योंकि सूर्य कुमार यादव टेस्टेड नहीं है, केएस भारत अभी एक भी टेस्ट मैच खेलना नहीं है। तो मैं पर्सनली डेफिनेटली ऋषभ पंत को बहुत ज्यादा मिस करूंगा, क्योंकि बैटिंग, वो जो काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट को अभी रेवोल्यूशनाइज हो चुका है। इंग्लैंड वैसा ही पूरा खेलता है। तो ऋषभ पंत को उस हिसाब से डेफिनेटली मिस करेंगे। लेकिन कीपिंग का अगर बात करें तो आई थिंक केएस भारत इज अ वेरी गुड कीपर। वो जब स्क्वाड में है तो इट्स अ गुड थिंग। केएस भारत इज फाइनली गेटिंग अ चांस टू मेक हिज डेब्यू, बट
Rishabh Pant, in terms of batting abilities, definitely I'm going to miss Rishabh Pant in this series. ओके। प्रत्यय क्या मतलब, एक तो ऋषभ पंत की हम लोग यहाँ बातचीत कर रहे थे, बट क्या हम लोग रिद्धमान साहा को रूल आउट कर चुके हैं सिचुएशन से? बिकॉज पहले जितना मेरे को याद है, जब भी टेस्ट होता था तो हम लोग रिद्धमान साहा की बात करते थे कि ये आएंगे और आकर के जो टेस्ट में जो जगह है वो अपनी बनाएंगे और इंडिया के एंड से खेलेंगे। सो डू यू सी कि हम रिद्धमान साहा को रूल आउट कर चुके हैं इस जगह से? और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो कि विकेट कीपर बैटर है, इवन ईशान किशन भी अभी रिसेंटली सिचुएशन में एंटर किए हैं। सो हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन as the wicket keeping end of India? See, two, three things. I think Sahab, of course, he's a champion cricketer and one of the best you will see in the business. Very underappreciated, very, very under-noticed kind of a player, because he came and he did his job quietly, perhaps never made a lot of noise, bailed India out of trouble with the bat as well on occasions. And he was definitely one of the fittest and one of the most agile wicket keepers you'll ever come across. But with age not being on his side and you having someone like a Rishabh Pant waiting in the wings, it was definitely going to happen that he would gradually phase out and you will perhaps give the baton to Rishabh Pant. And not to forget the kind of cricket that Rishabh Pant has played. I mean, all of us expected him to be a better white ball player when he was just bursting onto the scenes. Everyone unfailingly expected him to be a better T20 player or a better ODI player, but it absolutely turned out to be the opposite. Because if you look at his test record, the kind of centuries, the places where he has got those runs, England, Australia, and even in India, some of the knocks that he has gone on to play, you will see that Rishabh Pant, the test batter, is way, way better than Rishabh Pant, the white ball batter. So I think Yeah. because of that, that has been one of the cases that he was easily able to replace and fill in the spot of Saha. Because after Dhoni, it was always a question that who is going to be that kind of wicket keeper who can give you that ability with the bat as well. And for all what it's worth, I think Rishabh Pant has done that exceedingly well in a very short span of time. I think that was definitely going to happen. Saha, unless there is a flurry of injuries and something of that sort happens, you of course would not see him coming back into the side. Already we have heard what has happened with him in the last year when he was not given a chance to play with India in the Sri Lanka series and all of that. So I think Saha is, I think it's more of a complete story, but Pant is definitely your future. And as far as Kishan and KS Bharat is concerned, I think Bharat, of course, he has been Pant's understudy. I mean, for a very long time now, around 1.5 years, and he is the option that you are going to perhaps look at when it comes to your backup wicket keeping option, because he's someone who has got a lot of runs in the first class circuit, and he is a proper red ball cricketer. Ishan Kishan, of course, he is a good choice, but then he is a batter who has proven his white ball credentials a lot better than his red ball credentials. And as far as his form is concerned, I think yes, he got the double century against Bangladesh, but then he has struggled for consistency. That has been the case that he hasn't been able to fire consistently. Because if you see, Surya Kumar Yadav has been rewarded. Of course, he is a good domestic player as well. But if you see the recent form, the reason why Surya Kumar Yadav perhaps is in this side is because of what he has done in his white ball exploits. I agree that we should be mixing formats, but at the moment, it seems like that the management is giving and is rewarding players who are performing exceedingly well in red ball cricket, in white ball cricket, in red ball cricket as well. They're welcoming them that okay, let's give them a chance. Let's try to maybe capitalize upon their form and see how they perform in red ball cricket and how they respond to test cricket. So I think had that been the case, had he got a good series against New Zealand in the lead up to this Border Gavaskar Trophy, had he been in great form, perhaps we might as well have seen him playing instead of Pant. But now that is not the case. So I think it's the right choice and it's the right way to go with KS Bharat. So I think, yeah, it should be the right choice. I think KS Bharat over Ishan Kishan should be the way to go. राइट। और जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रेशर की, और जिस तरह का टेस्ट आउट ऑफ द फील्ड खेला जा रहा था अबाउट द पिच, वी कैन क्लियरली सी जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 आई है, बहुत ज्यादा बैठ कर डिस्कशन हुआ है अबाउट दिस कि कैसी प्लेइंग 11 होनी चाहिए। और एक बार मैं आपको बता देती हूँ प्लेइंग 11 क्या है ऑस्ट्रेलिया की, एंड दैट इज डेविड वॉर्नर, उस्मान ख्वाजा, मानस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, मैट रेनशॉ, पीटर हैंड्सकॉम्ब, एलेक्स कैरी, Pat Cummins, Nathan Lyon, Todd Murphy और Scott Boland। प्रत्यय, अगेन आई कम टू यू अबाउट दिस कि यहाँ पर बहुत सारे पेसर्स है जो कि मिस आउट कर रहे हैं। क्या आप हमें उनके बारे में बताएंगे? और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह की इन्होंने प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया ने अपनी यहाँ पर सामने शोकेस करी है, क्या ये उस प्रेशर की वजह से है जो पिच को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही थी उसके चलते? बिकॉज पेसर्स नहीं दिख रहे हैं बट बाकी सब दिख रहा है। See, I think stocks of Australia के already बहुत ज़्यादा hurt हैं because you do not have Stark, you do not have Hazelwood. Cameron Green as well, a very, very handy and a very crucial all-rounder. So that kind of left your number 6 spot vacant. Then you also have an all-rounder who could have chipped in with the ball. Now he is not there. Travis head is not playing, so he could have also chipped in with his part-time bowling. So I think yes, bowling stock is a little bit weak because if you look at the trio of
Cummins, Stark, and Hazelwood. And if you compare that with any trio in the world, I don't think that it is going to give you as strong an impression as that one does. So I think these two injuries, of course, have pegged them back to a great extent. But hopefully for them, it is only something that they are missing for the first couple of tests at best. Still, for the remainder of the series, I hope they will be available. But yes, at the moment, right, you will feel that yes, the Australian bowling is not looking as strong as perhaps you would have expected it to be when their squad was announced with all those players in. But it's also interesting, I mean, to see someone like a Scott Boland, because he has been extraordinarily impressive in a very short span of time in his career. But then you have to see how does he respond to the Indian challenges, because this is not Australia. You're not going to get that zip and that swing and that bounce from the tracks. So with that added, with that juice gone out of the track, it's great to see how would he make his grind in these kind of conditions. So great opportunity as well for some of the players to just kind of throw their hands up. And lest we forget the kind of show that India did in 2021, 2020-2021 series, when there was a flurry of players missing. But we all remember how India fought the odds and went on to win that series in a very dramatic fashion. So I think at the moment, Australia also are missing some very key players, because Cameron Green specifically, as I said, and even Stark and Hazelwood, if you throw in these players into this mix, then suddenly this team starts to look a lot more dangerous than it is looking at the moment. So I think if India could have done that in Australia with a young side, with inexperienced players, because the Todd Murphy, Scott Boland, these are not players who have Yeah. played in India, and they do not have a lot of experience either. So they might want to back themselves, take inspiration instead from India itself, that if they can come and they can win without their key players, so can we in India. राइट एंड इवन आई डू रिमेम्बर कॉस्ट ऑफ 2017 का टूर था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी, और उस टाइम पे आई रिमेम्बर पुणे की पिच थी, नेथन लायन एकदम नए नए थे, कभी इंडिया में खेला नहीं था उन्होंने, और द मूवमेंट उन्होंने एंटर किया फील्ड पर, उसके बाद बैक टू बैक विकेट्स, मतलब आई डू रिमेम्बर वो कितने लीथल हो गए थे उस दिन, और हम सबको पता चला कि देयर इज अ बॉलर इन ऑस्ट्रेलिया जिसे एक्चुअली पता है हाउ टू प्ले, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से उस कंडीशंस का फायदा भी उठाया था. सो कई बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ने चाहे इंडिया हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो बहुत सारे स्टार्स क्रिएट करे हैं, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिया है प्लेयर्स को. तो क्या इस मैच में जिस तरह से आप देख रहे हैं एक नई 11, काफी सारे नए प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया ने उतारे हैं, और इसके अलावा इंडिया की भी बात करें, सूर्य कुमार यादव टेस्ट खेलने वाले हैं, दो वो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं ओडीआई क्रिकेट में, बट स्टिल डू यू सी कि अब की बार स्टार्स देखने को मिलेंगे, जैसे बॉर्डर गावस्कर नोन है अपने प्लेयर्स को लेकर के और अपने तरह के मैच को लेकर के? जी डेफिनेटली एक प्लेयर ऐसा है कि जो कभी अभी तक इंडिया में खेला नहीं है. दो प्लेयर ऐसा है कि ऑस्ट्रेलियन टीम में जो मेरे को लगता है कि अच्छा कर सकते हैं, एक है उस्मान ख्वाजा और दूसरा है मानुस लबशेन. मानुस लबशेन अभी वर्ल्ड के नंबर 1 बैटर है, तो हम पता है कि वो कैसे खेल सकते हैं. वो स्पिन बहुत बढ़िया खेलते हैं, लेकिन इंडिया में स्पिन खेलना एक अलग बात होता है. तो वो मेंटली बहुत दिन से प्रिपेयर कर रहे थे. हमें पता है कि उन्होंने वीडियो भी डाला था कि वो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को काफी सीरियसली ले रहे हैं और काफी दिनों से मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं कि इंडिया में अच्छा खेलना है. और दूसरे उस्मान ख्वाजा, अभी ऑस्ट्रेलिया का मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड उनको मिला था. और अगेन ही इज समवन हु हैज नेवर प्लेड अ टेस्ट क्रिकेट इन इंडिया. So I'm really excited to see how Usman Khwaja plays, because at the top of the order, when David Warner is not really in form, barring that double century against South Africa, तो उस्मान ख्वाजा के ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया को एक गुड स्टार्ट दे. और वो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं उस्मान ख्वाजा, तो उस्मान ख्वाजा के ऊपर भी ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत डिपेंड करेगा. तो again, they are well known names, well established names, but then again, if you're talking about new stars in India, then I'm excited to see how Usman Khwaja and Manas Labuschagne play. राइट और इसी के साथ मुझे एक चीज और याद आई, जब कौस्तव बता रहे थे कि कैसे मानस लबुशे ने सीरियसली लिया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को. कौस्तव, यू रिमेम्बर अभी कुछ दिन पहले न्यूज भी आई थी कि स्टीव स्मिथ ने अश्विन का जो रेप्लिकेट कर सके उनका एक्शन ऐसे बॉलर को अपने साथ प्रैक्टिस पे उतारा है. एंड देन न्यूज हियर, जिसके लिए मैं इस चीज को यहाँ पे ब्रॉट अप कर रही हूँ, उन्होंने 2 बार या 3 बार शायद स्टीव स्मिथ को आउट भी कर दिया, जो कि सिर्फ अश्विन का एक्शन, जिस तरीके से अश्विन बोल करते हैं उस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की. आई एम वेरी श्योर कि वो इफेक्टिव रहे होंगे, बट स्टीव स्मिथ को उन्होंने आउट किया 2 से 3 बार. आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर, बट उन्होंने काफी टाइम उनको आउट किया. और उनका नाम महेश पिथालिया, आई डोंट रिमेम्बर, आई गेस यही नाम था उनका, महेश पिथिया. या महेश पिथिया. सो आई थिंक ये मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ये कॉन्फिडेंस बूस्टर था या उनको और एंजाइटी देना था कि स्टिल डूड यू रियली कांट डू दिस. अश्विन को डील करने से पहले आप महेश पिथिया को पहले डील कीजिए और देखिए कि आप रियली ऐसा कर सकते हैं कि नहीं. राइट कौस्तव? देखिए, आप प्लेयर सेम सिमिलर एक्शन वाले प्लेयर तो बुला सकते हैं, लेकिन क्वालिटी कहाँ से एकदम लाएंगे? उनके लिए.
तो शायद बॉलिंग एक्शन अश्विन को समझने के लिए महेश को बुलाया गया था, लेकिन अगेन व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी, और अश्विन कुछ भी कर सकते हैं। अश्विन ने उसके बाद एक ट्वीट भी किया था कि शायद वो ऑफ ब्रेक डालेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं अश्विन। इस अगेन हमें पता है कि जब भरत अरुण कोच था और ऑस्ट्रेलिया के लिए जब गए थे इंडिया लास्ट टाइम, तो प्रिपरेशन बहुत लॉकडाउन के टाइम से स्टार्ट हुआ था। अश्विन बड़े बड़े सीरीज के लिए बना है, ठीक है, तो अश्विन अगेन वो इन सब सीरीज के लिए बहुत पहले से प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लास्ट ईयर जैसे हम लोग लास्ट लास्ट एडिशन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जैसे हम लोगों ने देखा था कि अश्विन ने स्टीव स्मिथ को बार बार आउट कर रहा था, एक नए पंथरा से, कि लेग स्लिप डाल के उधर बॉल करके स्टीव स्मिथ को आउट किया जा रहा था। तो शायद इस बार भी अश्विन का कुछ अलग प्लान होगा। ऐसा नहीं कि आप बॉलिंग एक्शन डेफिनेटली महेश का देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी, what Ashwin can bring, no other bowler in the world can bring at the moment. When it comes to spin bowling, of course. Right, but on the serious note, Pratyay, 9 Aussies are in the top 15 ICC Test ranking, जिसको इंडिया फेस करने वाला है। और अगर मैं इस लिस्ट के बारे में आपको बताऊं, मैंने पूरी लिस्ट इसकी क्रिएट करी है कि आफ्टर ऑल क्या चैलेंज है इंडिया के लिए। सो फॉर द इंडियन फैंस, दिस इज फॉर यू। पैट कमिंस #1 टेस्ट बॉलर राइट नाउ, मानस Labuschagne #1 टेस्ट बैटर राइट नाउ, स्टीव स्मिथ #2 टेस्ट बैटर, Travis Head #4 test batter, Usman Khawaja #8 test batter, David Warner #14 test batter, Nathan Lyon #14 test bowler, और हेजलवुड तो है नहीं बट स्टिल #10 टेस्ट बॉलर, मिचेल स्टार्क #9 टेस्ट बॉलर, अगेन वो इसका हिस्सा नहीं है। बट ऑस्ट्रेलिया टीम इटसेल्फ जो 3 पोजीशन है उसमें #1 है। सो आई थिंक इट्स रियली बिग ऑफ अ चैलेंज फॉर इंडिया, एंड डेफिनेटली इट्स टेरिफाइंग फॉर फैंस एज वेल, बिकॉज इतने सारे टॉप लिस्टर्स के सामने इंडिया परफॉर्म करेगी। डेफिनेटली होम कंडीशन है, बहुत प्रिपरेशन है, बट ये एक आपको एक वो डाउट तो देता है ना कि क्या हो पाएगा, बिकॉज हमारा रिकॉर्ड भी है इंडिया में। अगर हम बात करें होम सीरीज जीतने की, हम बैक टू बैक 15 सीरीज होम सीरीज जीतते हुए आ रहे हैं, एंड हम नहीं चाहेंगे कि ये सीरीज का जो हमारा रिकॉर्ड है, ये स्ट्रीक है, ये टूटे। राइट प्रत्यय? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है, एज आई सेड, नॉट जस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के लिए भी ये बड़ा चैलेंज होने वाला है, बिकॉज आई डोंट थिंक एनी ऑफ देम इज थिंकिंग दैट दिस इज गोइंग टू बी अ केक वॉक, कि ऑस्ट्रेलिया आएगी और आपको मैचेस सर्व करके दे देगी और आप उन्हें जीत लेंगे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द टीम्स दैट हैज चैलेंज्ड इंडिया इन द पास्ट. यस, दे हैव लास्ट वन हियर इन 2004, but still you really cannot count them out at any stage at any stage of the game. And the names that you took, all of them brilliant players. Their rankings are suggesting something, because they are at those positions because of a reason. They have established themselves there because of a reason. So I think मुश्किल होगा of course इंडिया के लिए भी ये चैलेंज, बिकॉज 4 टेस्ट मैचेस हैं, सीरीज के एब्स एंड फ्लोज हमने देखे हैं, एंड आई थिंक at the moment, what I think is that India should look to capitalize upon the missing players, because right now Australia is not weak, but they are not as strong as they would have had all the names been inside this unit. Once they come back in, then you really never know what happens. So I think this Nagpur test, the next one in Delhi, when the players are perhaps not around, this is the moment for India to pounce on even harder and try to put Australia on the back foot. Although we have seen, like in the previous series itself, because usually in 4 matches series or in any series for the matter, you actually say that the first match is the tone setter. पहले मैच से आपकी काइंड ऑफ थोड़ा सा शायद लीग डिसाइड होने लगती है कि सीरीज किस तरफ जाएगी. Although हमने उसका एक्सेप्शन देखा है as recently as the last Border Gavaskar Trophy itself, because India was all out for 36 in Adelaide, then they win in Melbourne, draw in Sydney, and then win in Brisbane. But still, you still will feel that you would want to win early and do not leave things for too late, because the combination, the all the permutation and combinations for the WTC final, India have to win by a margin of 3-0, 3-1, or 4-0. And it's not going to be easy. It's definitely not going to be easy or to beat Australia those many times. So I think that India has to definitely show their A game. And yes, Virat Kohli is back in form. Rohit Sharma has been getting a few runs here and there. But still, you cannot forget that in Test cricket, a lot of players have not played a lot of Test cricket in this year. Previous year, India played only 3 or 4 or 5 Test matches, and Rohit Sharma has been missing a plenty of those because of injury issues. So I think if you actually look the Test captaincy, he hasn't got too many chances to show himself as well. So this is a great chance for him, the Test captain Rohit Sharma, to prove himself. So there's a lot that is riding on this particular series. Surya Kumar Yadav is there, so you have a new player who is coming into the ranks. Few key players missing from India as well. So there's a lot riding, and it's definitely not going to be an easy challenge. Slightly more difficult for Australia than India, but definitely difficult for India as well.
राइट। और कौस्तव, अगर यहाँ पर हम एक गुड पॉजिटिव नोट की बात करें इंडिया के एंड से, तो बैक टू बैक लास्ट 3 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया के नाम रही थी। एंड डेफिनेटली ये शो मैं एंड ही नहीं कर सकती अगर हम लोग अजिंक्य रहाणे को ट्रिब्यूट ना दे, बिकॉज वी ऑल रिमेंबर जो उन्होंने किया एज कैप्टन इन 2018, एंड द मोमेंट वी नो देयर वाज नो विराट कोहली, और इसके अलावा बाकी के बहुत सारे मेन प्लेयर्स भी मिस आउट कर रहे थे, बट द वे ही लेड, आई रियली वांट यू टू गिव ट्रिब्यूट टू अजिंक्य रहाणे। आफ्टरवर्ड्स विल क्लोज दिस शो। जी, अजिंक्य रहाणे के बारे में अभी again is someone I personally think he should have been the part of the squad for this series particularly because number 5 when you don't really have a quality player. Again, quality player is probably not the right word. Surya Kumar Yadav is not tested. KL Rahul has never played in Test cricket at number 5. Shubman Gill is again you are not considering at number 5. So probably they could have bring Ajinkya Rahane in because he has the experience playing really well in the domestic cricket at the moment. 70 से ज्यादा उनका एवरेज है अभी रणजी ट्रॉफी में, तो शायद आप कंसिडर कर सकते थे। बट अगेन इंडिया शायद उस रूट पे नहीं जाना चाहता है, न्यू स्टार बिल्ड करना चाहता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। एंड ट्रिब्यूट का बात करें तो ऑफ कोर्स 2020 और 2021 में जो कैप्टनसी की उन्होंने किया था कि इंडिया को एक हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज जिताया था, तो वो आई थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट इन इंडियन क्रिकेट एवर। एंड प्रोबेबली दैट्स इट। अगर अजिंक्य रहाणे के ट्रिब्यूट देना है तो अगेन 36 ऑल आउट होने के बाद वो जो नेक्स्ट मैच आया था मेलबोर्न में और सेंचुरी मारना, तो दैट टेल्स यू अ लॉट अबाउट हिज प्लेइंग एबिलिटीज। या दैट्स सो दैट्स इट आई गेस। मैं एक इसमें ऐड करूंगी स्टेटमेंट यहाँ पे कौस्तव, कि मैंने एक ट्विटर पे अभी मैं जब स्क्रॉल कर रही थी अबाउट दिस मैच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो समवन रियली हैज ट्वीटेड अबाउट अजिंक्य रहाणे। ही सेड कि मैं तो कहता हूँ कि अजिंक्य रहाणे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दो, बिकॉज ही डिड जस्टिस टू इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सो डेफिनेटली अपना अपना तरीका है सबका रहाणे का उस कारनामे को याद करने का, बिकॉज वी ऑल नो 36 ऑल आउट के बाद जिस तरीके से इंडिया ने लिटरली एक टर्न लिया और पूरे टेबल ही पूरी घुमा करके रख दी अपने एंड पे, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी ऑल नो इट्स हिस्ट्री। सो डेफिनेटली हम उस मूवमेंट को याद करेंगे, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी पॉजिटिव फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली इन देयर होम कंडीशंस। सो डेफिनेटली हम उसको याद करेंगे, और थोड़ी कुछ ही मिनट्स में मैच शुरू होने वाला है। सो उसकी अपडेट्स के ऊपर नजर रखेंगे। आप लोग सोशल मीडिया के जरिए या हमारी वेबसाइट के जरिए इस मैच रिलेटेड हर एक अपडेट के बारे में जानकारी रख सकते हैं। और इसके अलावा प्रति और कौस्तव और मैं, हमारा क्या है, हम तो वापस आपको से जुड़ेंगे और वापस आपको बताएंगे इस मैच के बारे में। तब तक के लिए देखते रहिए क्रिक ट्रैकर और देखते रहिए इन दी एयर शो।